Hey, my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So, this is my last and the final look for the Saraswati Puja, and you guys requested for a green sari look. So, here it is. I think you will love it because I have kept it very minimal, like wearable. So, if you want to know how I create this look, then please keep on watching. And also, as this is my birthday month, I'm holding giveaways, like total 13 giveaways, and वो मैं रखूंगी, like रख रही हूँ, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर जल्दी से फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आई हैव वॉश्ड माय फेस विद एब्स गुडनेस सैलिसिलिक एसिड टी ट्री फेस वॉश, एंड आई एम अप्लाइंग नाउ उसी सेम रेंज का टोनर। Next, I'm using Purple Snail Serum, and it has very, light consistency, slightly on a thicker side, but it gets absorbed very quickly and it doesn't make your skin tacky. I'm using a Purple ka lip balm to hydrate my lips, and also Good Vibes ka Rice Brightening Gel Cream to moisturize my face. इसका fragrance बहुत अच्छा है, and also ये बहुत ज़्यादा lightweight है and काफ़ी अच्छी तरीके से ना face को moisturize कर देता है। I'm using Stay Quirky primer and I'm applying it on my T-zone, press करते हुए, and it's a silicone based primer, so it's gonna fill your pores and give you that smooth skin for your foundation blending. एंड इसे मैं रखूँगी 2 मिनट्स तक, एंड तब तक मैं अपना ब्राउज को फिल कर लूँगी यूजिंग स्टे क्वर्की आईब्रो पेंसिल इन दी शेड आई गेस फियर्स ब्राउन, ऐसा कुछ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा शेड नेम जो है। एंड मैं अपने आईब्रोज को जो गैप्स है ना उसे फिल कर लेती हूँ। देन आई एम यूजिंग स्टे क्वर्की लिक्विड कंसीलर इन दी शेड सनसेट स्ट्रिपिन 3। इसका जो कवरेज है ना इट्स लाइक मीडियम, लाइक मीडियम शेयर टू मीडियम कवरेज, एंड इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है ये। सो मैं सबसे पहले तो इसे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ है पिगमेंटेशन प्रॉब्लम अराउंड माई माउथ, एंड ऑल्सो मेरे आईब्रोज के अराउंड में से अप्लाई करूँगी। एंड आई एम यूजिंग हियर अ ब्रश टू ब्लेंड दिस कंसीलर, एंड काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया एक्चुअली। यू कैन यूज योर फिंगर एज वेल। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग इनसाइट अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन इसके ऊपर से, बिकॉज आई वांटेड दैट स्किन वाला लुक ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए मैं इसको अप्लाई करी इसके ऊपर से, सो दैट मुझे वो वाला ना ड्यूई वाला इफेक्ट भी मिले एंड मेरा जो पिगमेंटेशन है वो कवर अप भी हो जाए। सो या यू कैन ट्राई दिस ट्रिक अगर आपको स्किन लाइक वाला फिनिश चाहिए, एंड आई लव दिस फाउंडेशन यू गाइस। नेक्स्ट टाइम यूजिंग पर्पल कॉम्पैक्ट टू सेट द एरिया जहाँ पे मुझे क्रिजिंग का प्रॉब्लम होता है, लाइक आइज के अराउंड एंड माउथ के अराउंड, लाइक स्माइल लाइन्स पे। To set my base, I'm using Wet n Wild Natural Finish Setting Spray, and this is my all-time favorite setting spray, you guys. It's affordable and yet very good in quality. And I'm going to start the makeup, like eye makeup, and for that I'm using Lakme Absolute Infinity Palette in the shade Pink Paradise. And the trick is I'm going to use the brush that it comes with, the applicator, sponge tip applicator. मैं इस डार्क ब्राउन शेड को लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। यू कैन सी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ इनवर्ड मोशन पे, लाइक इनवर्ड डायरेक्शन पे, एंड मैं इसे धीरे धीरे करके बिल्ड करूंगी जब तक मुझे ना डिजायर अमाउंट नहीं मिल जाता। सो आई थिंक यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश, लाइक सबके पास ही होता है, लाइक आई शेडो पैलेट के साथ ये ब्रश जो है ना वो आता ही रहता है। सो इससे आपका ईजिली आपका आई मेकअप जो है आप क्रिएट कर सकते हो, आपको अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो मैं इसे स्लोली अप्लाई करूँगी, पहले बिल्ड करूँगी, एंड देन मैं क्रीज पे इसे थोड़ा सा जो हार्श मुझे लिखेगा एजेस उसमें क्लीन कर लूँगी, लाइक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्रश की हेल्प से। देन मैं क्लीन साइड से ये जो शिमरी शेड है ग्रीन कलर का, इसे लेके मैं अपनी आई लिड के 1/3 इनर पार्ट में लगाऊंगी इसे, एंड देन मैं सेम डार्क ब्राउन शेड को लेके दूसरी साइड से आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करूँगी। नाउ मैं फिर से जो लाइट ग्रीन शेड है उसे क्लीन साइड की हेल्प से लेके लोअर लैश लाइन पे एंड ऑल्सो मेरे इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी, एंड डार्क ब्राउन शेड को लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, एंड ऑल्सो मैं अच्छी तरह से सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी। Next, I'm applying purple kajal, Wind Beneath My Wing kajal, and it's so black, you guys. It is super creamy and pigmented. तो इसे लेके मैं एक ना मेरे वाटर लाइन को पहले आइलैंड कर लूँगी, एंड मैं आउटर कॉर्नर पे एकदम अपर लैश लाइन पे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करूँगी, एकदम स्मॉल थिन सा लाइन ड्रॉ करूँगी। इससे ना आई लुक बड़ा सुंदर आता है एक्चुअली। सो या आई लव टू डू दैट। Now I'm curling my lashes and I'm applying sugar mascara, volumizing mascara. You can apply any mascara that you have, because I'm not going to apply any falsie. So this is my final eye look. Now for the face, I'm using Purple ka new launch, and this is their Dazzling Glaze Ultra
कंप्लीट फेस पैलेट एंड इसमें आपको मिलेगा कॉन्टूर शेड, हाइलाइटर शेड एंड ऑल्सो एक ब्लश शेड। तो मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से कॉन्टूर शेड को लेके अपनी फेस थोड़ा सा कॉन्टूर करूंगी। वेल इट्स टोटली ऑप्शनल, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, इससे ना पिक्चर्स काफ़ी खूबसूरत आता है एक्चुअली। अगर आप नहीं हो ना, जस्ट अप्लाई ब्लश एंड हाइलाइटर एंड ओनली ब्लश कैन ऑल्सो डू द वर्क। आई मीन ब्लश भी बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लश अप्लाई करो तो। सो आई एम कॉन्टूरिंग माई नोज एज वेल, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टूर योर नोज, कुछ भी हो जाए। सो अप्लाइंग दिस ब्लश शेड मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई करूंगी, लाइक फेस का हाईएस्ट पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई करूंगी। एंड द पैलेट इज रियली अमेजिंग एंड पिगमेंटेड एंड बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो रहा था। एंड लुक एट द ग्लो गाइज, आई मीन highlighter is really bomb, like bomb. And also I'm highlighting my collarbone. So for the lipstick I have today purple lipstick in the shade Binge Eating 03, yeah 3 या 03। इट्स अ ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन शेड, मैट लिपस्टिक है ये। एंड ये जो शेड है ना, मेरे आईज को इतना अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आज, मतलब ओ माय गॉड आई लव द लुक। सो जल्दी से मैंने इसे स्मच प्रूफ बना लेती हूँ। मैंने टिश्यू को डैप कर रही हूँ ताकि जो मेरा एक्सेस प्रोडक्ट है वो टिश्यू पे आ जाए एंड जो मेरा लिपस्टिक है वो मास्क प्रूफ हो जाए एंड स्मच प्रूफ हो जाए। आई एम गोइंग इन विद अ स्पंज, लाइक डैम्प स्पंज, ताकि जो भी मेरा एक्सेस है ना वो दिख रहा है वो सब निकल जाए। एंड दिस इज माई फाइनल लुक यू गाइज। एंड मैंने एक्चुअली थोड़ा बन बनाया यहाँ पे, फ्लावर ऐड किया है उसमें व्हाइट कलर का। आप चाहे तो इसे ओपन हेयर भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा ओपन हेयर पे ये तो। एंड आई एम वेयरिंग सिल्वर ज्वेलरीज। दिस इयरिंग इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड रेट्रो चिक ज्वेलरीज। एंड yeah, thank you for enjoying this series. I really enjoyed making this series for you guys. I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and I love you all.